Good morning, dear students. Welcome back to online EVS class. Students, as you all know that we have completed chapter 8, Keep Healthy, Be Safe. And today, now it's time to answer the questions. So, quickly open your book page number 54 and 55. We will complete the exercises that are given on page number 54 and 55. Okay? Yes, kids. See, it's page number 54. Let's have a quick recap of this chapter. Health is the state of being free from illness or injury. हेल्थ वो स्थिति है, वो है तब है जब हम किसी भी बीमारी से और किसी भी इंजरी से यानी कि चोट से फ्री हों. जब हमें ना कोई चोट लगी हो ना हमें कोई बीमारी हो, then we can say that we are healthy. Okay. Next point. To keep healthy, we must keep clean. हेल्दी रहने के लिए हमें क्लीन रहना होगा. वी मस्ट कीप क्लीन. ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड खाना होगा. एक्सरसाइज रेगुलरली. हर रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी. प्ले आउटडोर गेम्स प्ले करने होंगे. एंड फॉलो हेल्दी हैबिट्स. और जो भी हेल्दी हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो करना होगा. अगर हम ये सब करेंगे, इफ़ वी कीप क्लीन, ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, प्ले आउटडोर गेम्स एंड फॉलो हेल्दी हैबिट्स, इफ़ वी डू ऑल दीज थिंग्स देन वी मस्ट बी हेल्दी. तो हम हेल्दी ज़रूर होंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स to protect ourselves from getting hurt. और चोट लगने से खुद को बचाने के लिए we should follow safety rules. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम हर्ट होने से बच सकें. ओके किड्स. एंड नाउ इट्स टाइम टू आंसर. एक्सरसाइज A. Write T for true and F for false against each statement in the box. Yes, kids. Here 5 statements are given to you. You have to read them and you have to find that whether these statements are true or false. Okay. If it is true, then you will write T in the given space in the given box. If it is false, then you will write F in the given box. Okay, beta. So let's read first one. Always wear clean and well ironed clothes. हमें हमेशा clean और well ironed clothes पहनने चाहिए. Now tell me, is this statement true or false? Tell me fast, kids. Yes, it's true. So we will write T in the given box, in the first box. Okay, beta. Second statement. Brush your teeth only twice a week. Brush your teeth only twice a week. अपने टीथ को वीक में सिर्फ 2 बार ब्रश करना है. Now tell me, is the statement true or false? ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? Tell me fast, kids. Yes, this statement is false because we should brush our teeth twice a day. हमें दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना है. हर रोज़ 2 times अपने टीथ को ब्रश करना है. ओके. इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. ओके. यस. सो
Now we will read third statement. Okay. Wash your hands before and after every meal. हर एक मील के बाद यानी कि खाना खाने के बाद you will wash your hands, and before eating also you will wash your hands. Wash your hands before and after every meal. हर एक मील से पहले और बाद में अपने हैंड वॉश कर. Now tell me kids, this statement is true or false? Is it true or false? Tell me fast. Yes, it's true. We should wash our hands before and after every meal. हर एक मील के बाद और हर एक मील से पहले हमें अपने हैंड वॉश करने हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, वी नीड टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours एवरी नाइट. हमें हर रात क्या सिर्फ 2 hours की स्लीप लेनी चाहिए? Yes kids, tell me fast. Is this statement true or false? Tell me fast. Yes, this statement is false. So we will write F in the given space. Okay. We should sleep for 6 to 8 hours. हमें कम से कम 6 to 8 hours सोना चाहिए every night. Okay. Next, number 5. Playing video games is a good exercise. Video game खेलना एक अच्छी exercise है. Now tell me kids, this statement is true or false? Is it true or false? Yes, right kids, this statement is false because playing video games is not a good exercise. It is not an exercise. Okay. So here in the given space we will write F. Okay. Now exercise B. Fill in the blanks with the help of the help box. Now, some words are given in the help box. They are JUNK, junk, MOUTH, mouth, NOSE, nose, MEAL, meal, DAILY, daily. Junk, mouth, nose, meal and daily. These are the words given in the help box. Now we have to use these words and we have to fill the blanks. Okay beta. Now let us read first one. We should take a bath dash. We should take a bath, junk, mouth, nose, meal or daily. Which word will come here? Yes, right kids. Here will come daily. DAILY. We should take a bath daily. हमें हर रोज नहाना है. Next, number 2. We should wash our hands before and after every junk, mouth, nose, meal. Yes kids, which word will come here? Tell me fast. Yes, here will come meal. We should wash our hands before and after every meal. हर बार खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. Third statement, fill up. We should cover our nose and dash while sneezing. We should cover our nose and junk. We should cover our nose and mouth. Which word will come? Mouth. Very good. We should cover our nose and mouth while sneezing. जब भी हम sneeze करेंगे
तो हमें क्या करना है, हमें अपने नोज़ को और माउथ को कवर करना चाहिए. ओके. फोर्थ स्टेटमेंट, वी शुड अवॉइड ईटिंग डैश फूड. हमें किस टाइप के फूड को अवॉइड करना है? यस किड्स, टेल मी फास्ट. Which word will come here? Yes, right answer. Junk food. We should avoid eating junk food. हमें avoid करना है junk food खाना. Okay. Next. Picking your dash is a dirty habit. Picking your dash is a dirty habit. Yes, kids, tell me fast. Which word will come in the blank? Yes. Right answer. Nose. Picking your nose is a dirty habit. Nose में finger डालना, nose pick करना एक गंदी आदत है. So here will come nose. N-O-S-E, nose. Yes kids, now पेज नंबर 54 पर दी गई एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. And now we will move to page number 55. See, this is page number 55. Exercise C. Name the things that help you to keep your body clean. अब आपने यहाँ पर आपको 4 things दी गई हैं. You have to identify them and you have to complete the spelling of these things which we use to keep our body clean. ये वो 4 things हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर. व्हाट इज इट किड्स? व्हाट इज दिस? यस, toothbrush. It's a toothbrush. So here we will complete the spelling of toothbrush. T-O-O-T-H. Tooth. B-R-U-S-H. Brush. Now complete the spelling of toothbrush. Second picture. Look at this picture, kids. What is this? Yes, soap. So complete spelling of soap. S-O-A-P. S-O-A-P. Soap. Yes, kids, in the word soap, we will just pronounce the first vowel, that is O. A will remain silent. Okay. S-O-A-P. Soap. Look at the third picture. Now tell me fast, what is this? Yes, right. It's a comb. C-O-M-B. Comb. Yes, kids, in the word comb, B is silent. Okay. C-O-M-B, comb. Complete the spelling of this word. Okay, next is fourth one. Okay. Look at the fourth picture. What is this, kids? Tell me fast. Yes, it's a toothbrush. Toothpaste. It's a toothpaste. Now we will complete the spelling of toothpaste. T-O-O-T-H. T-O-O-T-H. Tooth. P-A-S-T-E. Paste. P-A-S-T-E. Paste. Toothpaste. Okay. अब आपने भी इन सभी 4 स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है करेक्टली. ओके. नाउ सी एक्सरसाइज डी. ड्रॉ अ स्माइली फेस फॉर द गुड हैबिट एंड अ सैड फेस फॉर द बैड हैबिट्स shown in the pictures below. One is done for you. बेटा यहाँ पर आपको कुछ गुड हैबिट्स दी हैं और कुछ बैड हैबिट्स दी गई हैं. ओके. यू हैव टू रीड them. You have to read all the given good or bad habits
and after reading you have to guess whether this sentence, this habit is good or bad. If it is good, then you will draw a smiley face. If it is bad habit, then you will draw a sad face in the given space. Okay बेटा, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, और फर्स्ट वन जो है ऑलरेडी आपके लिए किया गया है. एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड वन. ओके, नाउ लेट्स रीड द सेकेंड हैबिट. रन इन द क्लासरूम. नाउ गेस एंड टेल मी, is it a good habit or a bad habit? Run in the classroom. Should we run in the classroom? No, right. So it's a bad habit, and here you will draw a sad face. Okay. Third one, share your things. अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करो. Yes kids, now tell me, is it a good habit or a bad one? Yes, it's a good habit. It's a good habit. That is why you have to draw a smiley in the given space. Okay. Now let's read the fourth one. Walk quietly. जब भी आप वर्क करेंगे आप quietly करेंगे, यानी कि चुपचाप वर्क करना. Is it a good habit or a bad habit? Yes kids, tell me fast. Yes, it's a good habit. So here you have to draw a smiley face for good habit. Okay, next one. Listen carefully. ध्यान से सुनना. जब भी कोई बात करेगा तो हम उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. We will listen them carefully. Yes, now tell me, listen carefully is a good habit or a bad habit? Yes kids, tell me fast. Is it a good habit or a bad habit? Yes, it's a good habit. So here you have to draw smiley face in the given space. Okay. Sixth one, shout loudly. Should we shout loudly? क्या हमें जोर से चिल्लाना चाहिए, shout करना चाहिए? Now kids, tell me fast. Is it a good habit or a bad habit? Yes, it's a bad habit. We should not shout loudly. हमें जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए. Okay. And yes kids, now page 55 is also discussed. अब जो है मैम ने आपके साथ पेज 54 और पेज 55 दोनों ही पेजेस डिस्कस कर लिए हैं. Now you all have to complete the book work given on page number 54 and 55. Okay beta, thank you, goodbye and have a nice day to all of you.